Chalo, we start then without waiting for others to join in. Okay, they can join as the class progresses. So now till now we have done refraction, we have done laws of refraction, we have done refractive index, we have done experimental verification of the laws of refraction. Okay, now today we do the last part of section A, that is refraction of light through a rectangular glass slab. We had done a little bit in the last class, so we do it in detail today. And then we do multiple multiple images in refraction and reflection through a glass plate. Okay, and also we'll do a few numericals. That's all we'll be doing today. And then in the next class we start refraction through a prism. So let's start. We had done this. Okay, what we do is we take a glass slab and we draw its outline. Okay, we draw its outline. Once we have drawn the outline, we name it PQRS. Okay, that's the outline of this glass slab. Now I pick up a point O, I draw a normal NM at this point. Once I have drawn a normal, then I pick a angle. Okay, here I have chosen 60 degree and I draw ray AO. Okay, now AO is the incident ray. AO is the incident ray. Okay, and angle AON is the angle of incidence. Got it? Which means this angle AON, this angle is the angle of incidence. Got it? Now what happens that this ray suffers refraction. Okay, let's check it. How does it suffer? I keep it over here like this and I switch on my laser. Okay, I hope you are able to see it. I switch on my laser. There the laser goes and you see it's emerging over there. Okay, here it goes. I have moved it a little. There it goes, and you can see that it emerges a little away. Okay, because I'm holding it over here. Now you can see it's emerging. My finger is disrupting it. I remove my finger and now I do it. There it goes along the line and there it emerges. Okay, so you can see that it is emerging at this point, and I draw a normal. My hand is coming. My hand is coming. Okay, not able to see. Okay, but that will be there. Okay, I'll do it once again. I've kept the glass slab on the outline and now I send my ray like this. It goes along the line and there you see it comes out over there. You can see it. Here it goes along the line and there it comes out on that line. Got it? So when it comes out over here, I draw a normal N dash, M dash, and I draw a line along where it emerges. Okay, so now here BC is my emergent ray. Okay, and angle M dash BC is angle of emergence. Got it? Now I join the point where it was coming out. I join that point with point O. Okay, I join this with point O, and the ray OC is the refracted ray. OC is the refracted ray. Okay, BC is the emergent ray, AO is the incident ray, and OB, oops, this is B, OB is the refracted ray. Got it? So now my angle MOB, this red angle, the one which I have marked red over here, MOB is angle of refraction. This is my angle of refraction. Okay, now we know the reversibility of light. Okay, light exactly takes the path which it has taken when I reverse the direction of light. So initially that was the incident ray. Let's try it from this side. Here I bring it and there it goes. It emerges out. I remove my finger from here. Okay,
and you see it goes from here and there it emerges out. There it emerges around that line. You can see that. So it is exactly following the path, but now in opposite direction. This is reversibility of light. Okay, so because of reversibility of light, because these are parallel surface, PQ and RS are parallel to each other, therefore angle I is equal to angle E. The angle of emergence is equal to angle of incidence. Now if I extend my incident ray forward, then what do I see? That my emergent ray BC is parallel to the incident ray. My emergent ray BC is parallel to the incident ray. Okay, and if I draw a perpendicular between them, then this XY is known as lateral displacement. This is known as lateral displacement. Clear? Understood? So this distance, the distance with which the emergent ray has shifted, you can see the direction hasn't changed, but it is not in line. This was the original line, now the line is parallel to it. So the distance through which the emergent ray has shifted is known as lateral displacement. Got it? Now the next thing which we go to find out is that now this lateral displacement is dependent on what all factors. Okay, so the first factor on which this lateral displacement is dependent is on the thickness of the block. Okay, on the thickness of the block. The block was this thick. Okay, then the displacement was this much. Now I keep it like this, which means my block has become thinner. Now it is only of this much thickness. Okay, and now let's see. Okay, this is the original path. This is the original path. There you see. Okay, and I keep my block over here, and now you see the displacement is very little. Okay, the displacement is, let me shift it like this so that I also can see. The displacement, you can see, is very little. It's almost there. Okay, you can see that the new lateral displacement, it is just getting displaced by this much distance, which is very less. So as soon as I change the thickness, earlier the thickness was this big, okay, this broad, and now I change the thickness to this much. As soon as I change the thickness, the lateral displacement also became less. First it was around 12-13 centimeters, and now it has become just 2 centimeters. Okay, here it was around 12 centimeters, and when I changed it to the thickness to this thick, it became just 2 centimeters. So the first factor on which the lateral displacement depends is number one, thickness. Okay, thickness of glass slab. Okay, the second factor on which the lateral displacement depends is the angle of incidence. Okay, now you can see here the angle of incidence is around 60 degrees. Okay, when the angle of incidence is 60 degrees, then the light should have gone like this, but it is suffering a lateral displacement of around 12 centimeters. Okay, there you see. Now it is suffering a lateral displacement of around 12 centimeters. Okay, now here I change the angle of incidence. I have reduced the angle of incidence. Now the ray of light will travel like this, okay, at an angle of around 25 degrees. And now I see that the lateral displacement, there you see, the lateral displacement is less. Here the angle of incidence is less and the lateral displacement also is less. Okay, I reduced the angle of incidence and the lateral displacement became less. Now it is less than 5 centimeters, and there the angle of incidence was greater, so the lateral displacement was around 14 centimeters, much greater. So the greater the angle of incidence, greater is the lateral displacement. So we have learned two things. Number one, lateral displacement depends upon the thickness of the glass slab. The thicker the glass slab, the greater is the displacement. The lesser the thickness,
the lesser is the lateral displacement. The second thing which we have learned is that the greater the angle of incidence, the greater is the lateral displacement. The lesser the angle of incidence, the lesser is the lateral displacement. The final thing now, it depends upon the refractive index of the glass slab, okay, which means if it has greater optical density, okay, then it will have a greater refractive index and the lateral displacement will be greater. On the other hand, if the refractive index is less, the lateral displacement will be lesser because the bending will be lesser. Clear? So 3 factors we learned. The first one was thickness, the second one was angle of incidence, and the third one is refractive index of the medium, of the material or the medium of which the glass slab is made. Okay, that finishes refraction through a glass slab. Understood? Kritika, any issues? Understood? You've already given me a thumbs up. Okay, so we go to the next topic which we are going to discuss today. I'm erasing all this. I am erasing all this and we go to the next topic. Okay, the next topic is multiple images in a thick plane glass plate or a thick mirror. Okay, so how can I make that a thick plate, of thick plane glass plate? I take this and I've got a mirror over here. Okay, so what I do is I place the glass slab over the mirror. So now you can see that it has become a mirror which is quite thick. Okay, it has become a mirror. It has got a reflecting surface at the other end and it is quite thick. Now when I focus a laser on it, I will get multiple images. Okay, I will get multiple images. I hold a paper with my mouth to make the screen. Okay, and then I focus it. Okay, here you see. Okay, you saw? No, thank you, I'll do it. Okay, you saw it, you didn't see it. My hand was coming in the middle. Okay, they didn't see. No, they didn't see. Can you switch off the light for a second, please? Okay. There you see. You can see 3 dots. 3 dots, right? The middle one is the brightest. Can you see that? You can see 3 dots. Okay. Switch it on, please. So you saw 3 dots. I was holding the screen with my mouth and you could see that there were 3 dots. Okay. And now how are these formed? I already have the image in place, but I'll draw it once again for you. Okay. Now I'll draw it a little bigger so that you understand nicely. Okay. Now this is my thick glass slab. LMNO is my thick glass slab. Okay, and NO is the reflecting surface. NO is the polished surface. So this will reflect the rays away. Okay, got it? Now what I do is I take a light. Okay, I take a source of light at A and I take 2 rays. The first ray I say that goes perpendicular to the surface. Okay, which means it is at 0 degree. Got it? Yes, understood. Okay, so it goes at 0 degree. So if it goes at 0 degree, it will suffer no refraction and it goes straight, right? It goes straight. So if it goes straight, now it is incident at 0 degree, so it gets reflected also at 0 degree, so it again goes back. So the first ray starting from A goes back as such. Okay, so I extend it forward like this. The second ray I take at an angle. Okay, the second ray I take at an angle, so it is incident like this at an angle. Okay, wherever it strikes the first surface, I draw a normal to that surface, and what is going to happen to it?
it is going from a rarer to a denser, right? Which means that it should have gone like this, but it bends towards the normal. Okay, it bends towards the normal because it is going from an optically rarer to an optically denser medium. Now it strikes the reflecting surface. Okay, but we know that light does not go is not 100% refracted. पूरी की पूरी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होती है. ओके, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट भी होती है at the first surface. So some light over here, it goes away at the same angle. Okay, it goes away at the same angle. So if I am watching from here, अगर हमने अपनी आँख यहाँ पे रखी हुई है और हम यहाँ से देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट यहाँ से होती हुई आ रही है. ओके, सो आई गेट माई फर्स्ट इमेज A1 ओवर हियर. और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, दिस इज जस्ट 4%. ओके, 4% केवल लाइट रिफ्लेक्ट होती है. इसीलिए जो आपको पहली इमेज मिलती है वो बहुत ही हल्की होती है. ओके, 96% लाइट रिफ्रैक्ट होके अंदर चली गई. 96% लाइट रिफ्रैक्ट होके अंदर चली गई. अब यहाँ पे मैं नॉर्मल बनाता हूँ, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा. यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई at the same angle and it comes here, and now it is going from a optically denser to a optically rarer medium. Okay, तो उसको जाना था ऐसे, लेकिन अब वो नॉर्मल से दूर भागती है. उसकी स्पीड बढ़ गई तो वो नॉर्मल से दूर जा रही है. और हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है कि वो पहली वाली रे के पैरेलल हमारी आँख की तरफ आ रही है. पैरेलल वाली रे के पैरेलल हमारी आँख की तरफ आ रही है. गॉट इट? तो अगर हम इसको अब बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, तो हमें हमारी सेकेंड इमेज मिलती है A2. दिस वाज A1, हमें A2 मिलता है. एंड दिस, क्योंकि 96% लाइट रिफ्लेक्ट हुई, मतलब लाइट का मेजर हिस्सा आफ्टर रिफ्रैक्शन इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ. तो ये जो मेरी है, ये जो सेकेंड इमेज है, ये मेरी ब्राइटेस्ट इमेज होती है. दिस इज माय ब्राइटेस्ट इमेज. पहली वाली में तो केवल 4%, तो वो बहुत ही हल्की है. अब जब वो यहाँ आती है तो यहाँ पे इस सरफेस से फिर से रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, फिर से रिफ्लेक्शन होता है और केवल 4% लौट जाती है into the same medium. अब जब वो यहाँ टकराती है तो फिर से रिफ्लेक्ट होती है at the same angle, और अब यहाँ पे एक बार फाइनल रिफ्रैक्शन हुआ. ओके, दिस ऑल्सो गोज पैरेलल टू दिस. और अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो आई गेट माई थर्ड इमेज, विच अगेन इज़ अ वेरी डल इमेज. क्योंकि अगेन जब वो रिफ्लेक्ट हुई तो केवल 4% रिफ्लेक्ट हुई. ठीक है, 96% का 4% रिफ्लेक्ट हुई, बाकी सारी रिफ्रैक्ट होके बाहर चली गई. गॉट इट? सो आई गेट मल्टीपल इमेजेस. आई कैन शो दिस टू यू. अभी तो मैंने मुंह से स्क्रीन पकड़ के दिखाया था. आई कैन शो दिस टू यू. सो आई हैव अ थिक मिरर ओवर हियर. इसके अंदर हमने एक थिक मिरर लगाया. दिस इज़ माई लेज़र. ओके, एंड आई डायरेक्ट इट, एंड आपको देखो 3 स्पॉट से ज़्यादा दिख रहे हैं. ओके, और जो बीच वाला है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट है. जो बीच वाला है वो सबसे ब्राइट है. कैन वी स्विच ऑफ द लाइट फॉर अ सेकेंड प्लीज? कैन वी स्विच ऑफ द लाइट प्लीज? ओके, अब आप देखो, अब आपको दिखेंगे. ठीक है, सारे स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं. और देखो, आप जो सेकेंड वाला है वो सबसे ब्राइटेस्ट है. मेरे को रिफ्लेक्शन दिख रहा है दीवार पे, सो आई कैन सी इट ऑन द दीवार. यू कैन सी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. ओके, और आप देखेंगे जो सेकेंड वाला है वो सबसे ब्राइट है, बाकी सारे उससे डल हैं. जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है वो डल होते जा रहे हैं. गॉट इट? स्विच ऑन द लाइट्स प्लीज. Switch on the lights, please. Okay. So I hope Kritika you have understood how this phenomena occurs. Multiple reflection कैसे होता है. Okay. Give me a thumbs up. तूने like नहीं किया. You are the one who doesn't like every day. आज मुझे पता चल गया. Please like if you really like it. अगर नहीं पसंद आ रहा है तो don't like it.
and if you are liking it, then the like should go there, it should get registered. Got it? So that finishes whatever was to be done in this chapter. That finishes the first part of this chapter. I get a thumbs up and the like hasn't come still. Okay, chalo, we move forward. So now I make you do a little examples. Okay, a few examples. Who's the second person who gave me a like? That person is not communicating with me. Somebody has given me a like, but I don't see him on the comment box. So please write your name. I can thank you also. Okay, now we go to some questions. Some people had told me that I use a lot of English and it becomes difficult for them. You gave, okay. Some people have told me that I use a lot of English and I should use a little bit of Hindi also. So I'm trying, okay. I am bad at Hindi, but I try. मैं थोड़ी बहुत बोलने की कोशिश करता हूँ. Okay, so today I am starting with example number 7. Okay, example number 7 में वो कह रहे हैं कि a ray of light strikes a glass slab 5 centimeter thick. Okay, मेरे पास एक glass slab है और वो 5 सेंटीमीटर थिक है. Okay, this is what they tell me. 5 centimeter thick, making an angle of incidence equal to 30 degree. Okay, उसने जो angle of incidence बनाया वो 30 degree उसने बनाया. Okay, this much information. Then what happens? Draw a ray diagram showing the emergent ray and the refracted ray through the block. उसके बाद हमें दिया है कि इस ब्लॉक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5. ऑलराइट, तो अब हमें कह रहे हैं ये टू स्केल बनाना होता है. ठीक है, इसमें हम अंदाजे से नहीं बना सकते, टू स्केल बनाना होता है. तो मुझे म्यू दिया हुआ है 1.5, आई दिया हुआ है 30 डिग्री. ओके, दिस इज गिवन. सो व्हाट डू आई यूज? आई यूज स्नेल्स लॉ. आई राइट इट. ओके, यूजिंग Snell's law. What is Snell's law? Snell's law is that mu is equal to sine I by sine R. Okay, which means 1.5 is equal to sine 30 by sine R. Okay, which implies that sine R is equal to 1.5 sine 30. Okay, which means इसको हम लिख सकते हैं 3/2. 3/2 1.5 हो जाता है और sin 30 क्या होता है 0 1/2. तो 1/2. So I write it 1/2 over here. Okay, तो इसकी वैल्यू क्या आई? इसकी वैल्यू क्या आई? 1.5. Oops, sorry. Come on. This should have been by 130. I'm so sorry, I got it wrong. यहाँ से नीचे जा रहा है तो it should have been sin 30 by 1.5. Okay, so I can write it 2/3 into 1/2. So this cancels. So it's equal to 1/3. Okay, और हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि it is given sin 19.5 is equal to 1/3. Okay, which means my sin R is equal to sin 19.5. Okay, which means my angle of refraction is equal to 19.5 degrees. Got it? Kritika, understood? Yeah, you have already given 1.5. I had gone wrong. I missed it. नीचे ले जाने की जगह multiply कर दिया था. Okay, so angle R is equal to 19.5. So what I do now is that now I take my protractor like this, okay, and I make an angle 19.5. This is 10, this is 19, this is 19.5. Okay, so I draw my refracted ray like this. Got it? इस एंगल को मैंने 19.5 डिग्री लिया और मैंने अपनी रिफ्रैक्टेड रे बना दी. जहाँ पे बनी वहाँ पे मैं फिर से प्रोटेक्टर रख के एक नॉर्मल बनाता हूँ और 90 डिग्री बना देता हूँ. गॉट इट? एंड आई नो दैट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा. तो मैं फिर से यहाँ पे प्रोटेक्टर रखता हूँ और 10, 20, 30 डिग्री. ओके, फिर से मैं 30 डिग्री पे अपनी इमर्जेंट रे बना देता हूँ. गॉट इट? एंड I can write over here 30 degree. I have already written 19.5 over here. Okay, I name this is N, M,
दिस इज एन डैश एम डैश. ओके, और कुछ मांगा है इन्होंने? एनीथिंग एल्स हैव दे आस्क्ड? लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी मांगा है, तो आई विल हैव टू यूज़ द बिगर स्केल. आई विल यूज़ द बिगर स्केल. अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन्होंने पूछा है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लेंगे और ये हमारे इसके पैरेलल होनी चाहिए. ओके, ये इसके पैरेलल होनी चाहिए. हमने इसको डॉटेड लाइन को सामने लाया और ये हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है. ओके, वी यूज़ द स्केल टू मेजर द लेटरल डिस्प्लेसमेंट and it comes out how much is it? Around 1 centimeter. ठीक है, it comes out to be around 1 centimeter. When we measure it, it is around 1 centimeter. Correct? Have you drawn the diagram, Kritika? We are giving the answers, but have you drawn the diagram? If you have drawn it, good. Okay, you should practice it. We go to the next question. Next कौन सा करेंगे हम? नेक्स्ट हम करेंगे अब अनसॉल्व्ड 14. अनसॉल्व्ड 14. ओके, यस, ओके, नाइस. सो कृतिका, नाउ वी गो टू 14. ओके, वी गो टू क्वेश्चन नंबर 14. So we have question 14 over here, and what does it say? Let's read it out. It says that a monochromatic light. What do I mean by monochromatic? मोनोक्रोमैटिक का क्या मतलब होता है? What do I mean by monochromatic? जल्दी से बताओ. नहीं पता तो लिख देना नो, डोंट नो, मैं बता दूंगा. डोंट कीप मी वेटिंग. अगर पता है तो राइट इट डाउन, नहीं पता है तो टेल मी डोंट नो. या, देयर इट कम्स. It is composed of a single color. Very nice, smart girl. Okay. Ayush has written. Okay, Ayush, where were you? बड़ी late आया. चलो, Ayush has written. It is composed of only one color. Okay. तो केवल अगर एक ही रंग की लाइट है तो हम उसको मोनोक्रोमैटिक बोलते हैं. तो now as they say, a monochromatic ray of light passes from air to glass. Okay. अब ये ग्लास है और ये एयर है, तो वो कह रहे हैं एयर से ग्लास में गई. ओके, पहली जानकारी ये मिल गई. नेक्स्ट व्हाट डू दे से? द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज लैम्डा. ओके, अब एयर में उसकी वेवलेंथ जो थी वो लैम्डा थी. अब ग्लास में जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? जल्दी से बताओ. ग्लास में जाएगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी कि घटेगी कि सेम रहेगी? यहाँ पे वो कह रहे हैं वेवलेंथ लैम्डा है. अब वो ग्लास में गई तो वेवलेंथ बढ़ी, घटी या सेम रही? क्विकली टाइप इन. कृतिका तूने आंसर नहीं दिया था पिछले वाले का, आयुष ने दिया है. आयुष, यू ऑल्सो कैन आंसर. ओके, आयुष सेज इट विल रिमेन द सेम. कृतिका डजंट आंसर. शी आंसर्स. Yeah, there she answers. Kritika says increased. Okay, मतलब दोनों को नहीं बताया. Okay, देखो बेटा, अब फ्रीक्वेंसी जो है वो तो सोर्स पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है. ओके, अब हम स्पीड पे जाते हैं. तो अगर हम स्पीड देखें एयर में, ओके, तो दिस स्पीड इज ग्रेटर दैन दिस. वी ए इज ग्रेटर दैन वी जी. ये तो आपको पता है कि जैसे ही वो ग्लास में जाएगी स्पीड कम हो जाएगी. ओके, अब दूसरी रिलेशन जो हमें पता है वो हमें पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. एफ फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है, v वेलोसिटी है या स्पीड है. गॉट इट? विच मीन्स मेरा जो लैम्डा है दैट इज इक्वल टू v बाय एफ. गॉट इट? विच इज इक्वल टू v बाय एफ. अब क्योंकि वी ए ग्रेटर दैन है वी जी, देयरफॉर जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा लैम्डा इन एयर विल बी ग्रेटर देन लैम्डा इन ग्लास. क्लियर? क्या लिखा? इंक्रीज्ड ना डिक्रीज.
इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड. अब समझ में आ गया? वेरी नाइस कृतिका एंड आयुष दीक्षित. ठीक है, तो अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो मतलब मेरा लैम्डा एयर में ज़्यादा था और मेरा लैम्डा, मेरी वेवलेंथ ग्लास में कम होगी क्योंकि ग्लास में स्पीड गिर जा रही है. फ्रीक्वेंसी दोनों जगह सेम है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है. ओके, तो लैम्डा ए इज इक्वल टू वी ए बाय एफ एंड लैम्डा जी इज इक्वल टू वी जी बाय एफ. ओके, तो एफ एफ कैंसल्स, ये बड़ा था तो इसलिए वेवलेंथ भी एयर में बड़ी होगी. अंडरस्टूड? ये ध्यान रखना, रिमेंबर दिस. एंड नाउ तो इसकी अब वेवलेंथ गिरने वाली है ग्लास में. ये पूछ क्या रहे हैं आप आगे? द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज सी. ओके, अब हमें इन्होंने दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज सी, और क्या दिया है? एंड इन ग्लास इट इज़ वी. ओके, ग्लास में वी ए इज इक्वल टू सी एंड वी जी इज इक्वल टू वी, ये दिया हुआ है. ओके, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दी हुई है. ओके, म्यू जी इज इक्वल टू 1.5. refractive index of glass is 1.5. Write down the relationship between C and V. So now they are asking for the relationship between C and V. Okay, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? हम इसमें स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे. ठीक है, हम इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन यूज़ करेंगे. गॉट इट? हमने अभी अभी सीखा कि F एयर के केस में क्या होगा? C by lambda. Correct? This is the first thing which we'll get. We use again the same, using V is equal to F lambda. ठीक है, तो एयर में उसकी स्पीड है C. ठीक है, तो which means पहले वो लिख लें, which implies that C is equal to F lambda, which implies that F is equal to C by lambda. Got it? ये हमने पहला डिराइव कर लिया. F is equal to C by lambda. Got it? Then what do we do? Then we also know that F is equal to V by lambda dash in glass. In glass, this was in air. ठीक है, एयर में C is equal to F lambda, which means F is equal to C by lambda, and in glass frequency नहीं बदलेगी, so F is equal to V by lambda dash. Okay, तो हम इन दोनों को अब इक्वेट कर देते हैं. And what do we get? We'll get the relationship. Okay, so from 1 and 2, this is 1 and this is 2. Okay, so from 1 and 2, C, हमें C और V निकालने को बोला था ना, C और V. ठीक है, तो C by lambda is equal to V by lambda dash. Got it? Which means C is equal to lambda कितना है? lambda नहीं मालूम है. Okay, C is equal to C by lambda हमें दिया हुआ है ना, हमें क्या दिया हुआ है? म्यू जी दिया हुआ है, ग्लास दिया हुआ है. So we know that refractive index of glass is equal to speed of light in air by speed of light in glass. Got it? Which means C by V हमें दिया हुआ है 1.5. So C by V is equal to 1.5. Okay, so this becomes C by V, हम इधर ले आए, C by V is equal to lambda by lambda dash. So 1.5 हो गया. Okay, which means 1.5 lambda is equal to 1.5 lambda dash is equal to lambda. ये वेवलेंथ का उनका रिलेशनशिप आ गया. Okay, so this is C by V, so इन दोनों में 1.5. Okay, so this is 1.5 is equal to C by V, so C is equal to 1.5 V. So this is our A का आंसर and this is our B का आंसर.
Clear? Kritika says understood both. No, hasn't written anything. Kritika, समझ में आ गया? अब वो दो चीजें पूछ रहे थे. पहला पूछ रहे थे सी और वी का रिलेशनशिप. तो सी और वी का रिलेशनशिप हमें यहां से मिल जाएगा. ओके, हमें मालूम है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल, ग्लास का जो है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ओके, सो वी यूज दिस रिलेशनशिप और हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो हमने 1.5 डाल दिया एंड देन सिंपली वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. इसको हम इधर ले आए तो c इज इक्वल टू 1.5 v विच मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ये हमने पढ़ा भी था जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से कितने गुना बड़ी है. राइट? कृतिका सेज अंडरस्टूड. ओके, सेकेंड वाला पार्ट, दिस इज बी पार्ट. बी पार्ट में वो पूछ रहे थे कि लैम्डा और लैम्डा डैश, यहाँ पे हमने ये डिस्कस करा कि ये कम हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम हो जाएगा, तो उनका रिलेशनशिप क्या है. सो वी यूज दैट c इज इक्वल टू v इज इक्वल टू f लैम्डा. तो c इज इक्वल टू f लैम्डा विच मीन्स f इज इक्वल टू c बाय लैम्डा. ये हमारा फर्स्ट हो गया. नाउ इन ग्लास द फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज सो इट बिकम्स v अपॉन लैम्डा डैश. ये हमारा सेकेंड हो गया. हम दोनों को इक्वेट करते हैं और हमारा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश इज इक्वल टू 1.5 lambda. Got it? Lambda is equal to 1.5 lambda dash हमारे पास आ जाता है. This is 1.5, so 1.5 lambda dash. Lambda is equal to 1.5 lambda dash is the relationship. Okay? तो उनका रेशियो पूछेंगे तो 1.5 is to 1. Done? That's all for today's class. Thank you very much. You want to do any more questions? You please try the end exercises. Okay, and in the next class when we come today, very few people had joined in, just 4 people watching at present. So I don't know, all of them are celebrating their Sunday. So now that we are through with the first part, you can try these questions and any question which you are not able to solve. Okay, there are 28 questions and 4 numericals. Okay, so in case 29 questions and 4 numericals, so you should try all of them. Any one which you are not able to do, you can always send it to me, write it to me, and in the next class I'll explain it to you. In the next class we'll start with refraction of light through a prism. Thank you very much. That's all for the day. I hope you enjoyed it. Enjoy your Sunday. See you in the next class. Thank you. Bye bye.